billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Now, continuing the same sequence that I have said, that is the about the house officers in Pakistan, the fate of them, and the behavior of the hospitals for the house officers. They are not programmed. I has already said that it is not programmed. They have not decided what to do, what not to do. And even curriculum has not been created for them exactly. Designation, job description, etc. Now continuing the same thing now, because I left it because of the internet problem previously. The continuation is this, that we have read up to here. That is the suggested house job activities and solutions. I am Professor Ali Haidar, a visiting professor of medicine, GSMU, so called. Now, ideal house job. What do you mean by ideal house job? Curriculum should be designed. It should be designed, properly mentioned, what to do, what should be done in medical ward, in the chest ward, and in the other wards. Curriculum. Medical and light, surgical and light. 1 year whole period should be made per curriculum as concerned. Job description should be clearly explained. What is job description? It means that when you come, what is the timing, what is the type of the job you do. You are a house officer, meaning the medical officer. And you are a doctor, you are a physician, under training, whatever it is, it should be mentioned clearly. You are not a nursing staff, not a part of them. So this should be their job description. It is a legal document. The clinical work should be supervised. When you are doing some clinical work, for example, you are doing examination, specific examination, etc., or you are doing the lumbar puncture, for example, it should be supervised. They said, do it here. Personally, I am sitting in the room. If there is problem, please call me. Ye nahi, that's wrong. You should say to the consultant or whatever the initial supervisor or first supervisor that you will do it, this procedure, I will watch it, and then I will do it again, and then you will watch. Then you will watch, so that I can understand well. The house officers are not answerable to immediate supervisor. PG, they are mostly PGs, immediate supervisor. You are not answerable. But the vice versa, that supervisor, immediate supervisor, should be responsible for that bad patient and answerable to the consultant, not to you. You are not to him and he is not to you. Answerable person should be PG or supervisor, which is answerable to the consultant that this has happened. The patient died because of this, because he has got these complications, and we try to manage it. And consultant will definitely question him what happened actually, etc. Today, you remember, is the media's invasion in Pakistan. And the negative impact of the media is that if you call them, they will come and very, very happily, because the team will covering this, even will be paid heavily. If it is a good, sort of a thing hadn't happened. Like somebody, for example, death occurred because of the lumbar puncture. After lumbar puncture, our procedure, you are doing a procedure, and the patient died afterwards. I have seen one death after GI endoscopy, ever GI endoscopy. So they call media, usually, and media will come in 10 minutes, and they will start recording, and some parties they will send directly online and live exam. Everybody will watch the whole world what is happening. It should not be done like this because of this. House officers are not responsible, because he is in a training, 100%.
but the immediate supervisor is answerable to the consultant. Try to understand this important legal matter. After the end of the house job, what you have learned, this is the problem. These medical officers should be confident, number one, confidence in making the differential diagnosis, in provisional diagnosis, and final diagnosis. And they should know what are the management strategies and should be in position of the power of decision regarding patient who is and beneficiary. And beneficiary is our target. Patients are our examiners. They should be benefited by your work and by your hardships and by your knowledge. Some examples showing tripling position of the house officer at duty. Now here the recent event. In one tertiary hospitals, medical emergency has, which is called ICU. In every unit they have got ICU, medical ICU. They medical 1, medical 2, medical 3, whatever it is. So that house officer was alone when he or she was attending this patient. The case summary was written and he was sent to me for the guideline. 55-year-old male with the known history of diabetes mellitus, as a resident of Garden Road, and is presented with the complaining of the abdominal distension, fever, 1 month. Here it is written siblings, they are positive for the hepatitis B or hepatitis C. Here it is not declared the patient has been suffering from hepatitis B or C. But this is a mistake. Actually, this is direct question should be, should be asked to the patient that you are suffering, you have chronic hepatitis A, B, C, D, E, F, whatever it is. It should be mentioned. And the time of the presenting complaints when the patient arrived. And this is the history, very short, complaints with duration. And now here is he or she is written the tense abdomen, massive splenomegaly, generalized swelling, and asarca, that is. And ascitic DR was done, which showed the appearance semi-turbid. Proteins is 1437. Albumin is not given here. It should be done, albumin, it is not written. WBC is 6162 and glucose 112. Volume polymorphs is 55% and lymphocytes was 45%. Up to here it seems to be it is one of the disease that it is the patient has been suffering from the cirrhosis because the hard data is there. Presence of ascites, presence of splenomegaly, massive, and asarca. And this showed that this is the patient of, you are dealing with a cirrhotic patient. And this is these are the complications, one of the complications which is mentioned here of the cirrhosis. Ascitic dose has been done but not done correctly because the proteins, I need albumin. Why? Because the SAG, serum ascitic albumin gradient, it is 1.1 or more, or is less than 1.1 or less. If it is more than 1.1, it means that it is transmitted. If it is less than 1.1, it means that it is exudate. So it is, I cannot, we cannot do the SAG in this case, because SAG should be done with this protein, should be cleared which proteins, albumin, not whole protein. The SAG cannot be determined. It is a gradient, remember. You have to minus the serum albumin with the ascitic albumin. If it is 1.1 or more,
it means that it is transudative. That's 1.1, it means it is exudative. So if it is exudative, then the differential diagnosis is different. If it is transudative, differential diagnosis will be different. That is why this SAG is so important. So I will explain separately. I have to take every complication. I can, previously I have given 4 to 5 video presentations, but nobody seen properly these presentations. I request you who are appointed in the wards as a house officer, appointment, like this is a specific word, I am not posted, appointed in the wards of medical and allied, they should revise these videos, because I have more than 300 and 210 videos, more than that, to try to find that videos from liver and electric depression and acute hepatitis and the terminologies we are using, and with the help of the terminologies, what is chronic liver disease, autoimmune hepatitis, and the cirrhosis, and primary biliary cirrhosis has been discussed with it, and the complication associated with the cirrhosis, and the treatment which are given for the management has got adverse effect also. So as far as is concerned, in the complications, there are 5 6 complications. Which I have already done it previously, but I think I will take it separately one by one on my next presentation probably, but I will be fine. So that lab investigation, he or she noted that hemoglobin 8.7 now. At one time when he arrived, the hemoglobin was lower down. Okay, now here is the hematocrit, which is 24.4. On the 4th, on the 5th it is slightly better. Slightly better, it is 8.7, 8.9. There is hardly any difference. And again the RBC count is lower down. WBC is 8.48, same picture is given here. Neutrophil 73%. All the lymphocytes have not been given here. It is not leukocytosis, it means that. Symbol is that. And the relative, possibly it is relative neutrophilia, we don't know. Urea 2.99, 299. Here 243, it is 279, because one, they have done it, the hemodialysis. It reduces this. Creatinine at the time is 11.18, now it is 15, after the dialysis even. Sodium was 129, it is 127, hyponatremia. Potassium 5.6, slightly higher. It is, potassium is 5.4, it is not, you cannot say it is abnormal. Chloride is 97, normal. Bilirubin 0.26, and the direct was 0.11. Hardly any difference you will find. The important thing is the patient has been suffering from chronic disease. ALT is important in this case. If it is low ALT, I am expecting high ALT. It means that all cells are destroyed, 70% more than that. If it is about 20, between 20 to 30 or 20 to 35, it means that about 30% cells have been destroyed completely and not regenerated in a normal fashion. If it's less than this, I have seen a case where the ALT was 2 only. हम बड़े खुश हुए, हमने प्रोफेसर साहब से कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। हमने कहा ALT 2 3 2 और 3 आ रहा है, तो उन्होंने एक जोर का चमाटा मारा। मैं बराबर में खड़ा हुआ था उस टाइम में, मैं जो था वो
फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी कर रहा था। बड़े अच्छे हमारे वो थे सुपरवाइज़र, उन्होंने गिरेबान से पकड़ लिया मुझे। उन्हें बेवकूफ़ आदमी लेबर जो है ना, जो काम ही नहीं कर रहा, तो जब सैलरी मौजूद नहीं है तो कहाँ से बना ALT कहाँ से बनेगा? ना SGT बनेगा, ना SGPT बनेगा। ये ख़राब निशानी है। ओहो, मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात होगी। देखा भाई, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड मसला हो जाएगा ना इसके अंदर। लेकिन अनीमिया भी है इसमें, आपने सब कुछ बता दिया। उसमें वर्क किया नहीं किया, ज़ाहिर है इतना फैसिलिटीज़ नहीं है आपके पास, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे वो। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो 116 है, थोड़ा हाई लेवल है। लेकिन जो गामा GT है, जो शो करता है इंट्रा हेपेटिक टाइप ऑफ बिलियरी स्टेसिस, वो जो था 101 था, तो अब ये हो गया 113। नॉर्मली होता है तकरीबन 45। ये शो कर रहा है कि स्टेसिस का मसला है। टोटल प्रोटीन 7.6 है, ये इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। लेकिन एल्ब्यूमिन रिलेटिवली जो है वो 2.0 है। हम अभी कहेंगे जी प्रोटीन, बाकी जो है वो प्रोटीन जो गामा ग्लोबुलिन है, क्योंकि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आया है कि स्टिल उसको फीवर हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, यानी गामा ग्लोबुलिनिमिया हो जाएगा, हाइपर गामा ग्लोबुलिनिमिया हो जाएगा। इसलिए ये तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन ये तो जो बेसिक वर्क है लिवर का, प्रोटीन जो बनाते हैं वो एल्ब्यूमिन, इट इज एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। इसके साथ इन्होंने लिखा है कि मैग्नीशियम 4 है, ये हायर साइड है बहुत, और फॉस्फेट बहुत ज़्यादा है, 9.3 SCRP बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम जो है हाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, माइल्ड है, 7.5 तक हम नॉर्मल लेते हैं। प्रोटीन फॉस्फोकाइनेज 77 है, LDH बहुत ज़्यादा है। ये भी इन्होंने कराए हैं। तो ये पूछना चाहिए था हाउस ऑफिसर को कि LDH क्यों कराया आपने, CPK क्यों कराया है। ये तो आपका काम है कि उसे पूछें, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये डिस्कशन हो सकता है कि वो आदमी भी देखे जिसने जो सुपरवाइज कर रहा था। तो मैं उसका डिग्निटी रखता हूँ अपनी जगह कि भाई ठीक है, आप भी हमारे ही शागिर्द है ना भाई। आपके जो ये जो बेड है, इसके ऊपर जो PG है वो भी मेरा स्टूडेंट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी मेरा स्टूडेंट है, जो एसोसिएट है वो भी मेरा स्टूडेंट है। यहाँ तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। तो अब ये सबके लिए ये नहीं है कि कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मतलब कहने का ये कि ये बेचारे, ये बेचारी परेशान हो रही है कि करें क्या, ये है क्या चीज़। हाँ, क्लियर एक्सप्लेनेशन हो गया ना। और उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, इन्वॉल्व इंजेक्शन एल्ब्यूमिन, इसकी तफसील नहीं लिखी है कि कौन सा एल्ब्यूमिन दिया गया, किस तरह दिया गया। नॉर्मल सलाइन 1 लीटर दिया गया तो क्यों दिया गया, सेप्ट्राक्सन दिया गया क्यों दिया गया, राइजिक दिया गया तो क्यों दिया गया, डिफ्रैक्ट है, टैबलेट 2 मिलीग्राम क्यों दिया गया, ठीक है, टैबलेट दिया गया इसको 2 मिलीग्राम स्टेप। लाजॉन विद किया था, जो वो जाने कोई हाउस ऑफिसर ले गया इसको, और फिर उसने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लाइन लगाई है वहाँ। फर्स्ट सेशन उन्हें कहा कि डायलिसिस करनी पड़ेगी, फीमोरल डायलिसिस की मैंने। सेकेंड सेशन एडवाइस किया तो उसके लिए आपको पोर्टल बनाना पड़ेगा ताकि आइंदा भी कर सकें आसानी के साथ। फिर इंजेक्शन कॉकटेल लगा दी इन्होंने इंट्रावेनस, और ECG इन्होंने ऑर्डर किया जो इसमें नहीं है। आपको पता है ECG मेरे लिए बड़ा अहम होता है, एक्सरे बड़ा इम्पोर्टेंट है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी फ्रेश मुझे यानी हमें चाहिए होती है। और वो आप लिखेंगे तो कर भी देंगे। तो प्लेन वाटर, कितना प्लेन वाटर देते हैं, कितना क्या देते हैं, कितना क्या देते हैं, मरीज़ को भूखा मारना है, क्या करना है, ये इसमें कुछ नहीं लिखा। इसमें लूप होल्स हैं बहुत सारे ना। तो जिसने भी केस किया था तो उसके लिए नहीं कि आपने अपने लिहाज से जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मैं आपको शाबाशी दे रहा हूँ। ये जिसने भी ये लिखा, मुझे नहीं पता किसने ये भेजा है, मैं नहीं जानता। तो एक बार कहने का ये कि अच्छा किया है। इसका जो जवाब आपने मांगा है कि इसको एक्सप्लेन करना, इसके लिए मुझे जो है ना अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप एसाइटिस इसके अंदर जो है ना हार्ट रेट है, स्प्लीनोमेगाली हार्ट रेट है। तो जब इसको बताएंगे अलग अलग करके तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्यों दिया गया है। ये चीज़ें जो लिखी गई हैं ना, इसकी वजूहत हैं, तो वह है, तो वो क्लियर हो जाएगा वो। फिर दूसरा हाउस ऑफिसर कहता है वॉन्डरिंग, सेकेंड ऑफिसर है बच्चा हमारा, वो वॉन्डरिंग इन द वार्ड है फॉर गाइडलाइंस,
पूछता फिर रहा है पीजी से, मैं क्या करूँ इस केस का, ये भी लिखा हुआ है। क्या है कि 73 ईयर ओल्ड मेल है, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस है 20 ईयर्स से, कौन सी डायबिटीज़ है ये नहीं लिखी इन्होंने। इसको जो है वो हाइपरटेंशन नोन है 10 ईयर्स से, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ नोन है, और इसको पेसमेकर भी डाला हुआ है 10 ईयर्स बिफोर विद परमानेंट पेसमेकर डाला हुआ है और स्टंट डाला हुआ है, पीसीआई टू लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग डाली हुई है, सब कुछ कर चुके हैं। 73 एज डायबिटीज़ मेलाइटिस तो था जिसने वर्स किया, और ये को उसके साथ जो है एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है। Now he is presented with altered sensorium and focal fits. उसमें दो डिफरेंशियल बनती है इस कंडीशन में। टॉप पे तो हाइपोग्लाइसीमिया है, जो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। दूसरे हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी है, तो वो ये दोनों काम कर सकता है। तीसरी जो है वो जो अभी हुआ है वो फ्रेश सीवीए हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए। और चौथी चीज़ भी हो सकती है इसके अंदर कि कोई मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हुआ है, हाइपोनेसीमिया भी ये कॉज कर सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि इन एज में कोई पता नहीं होता, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है कुछ लोगों को, वो भी इसी तरह से प्रेजेंट करता है, बिल्कुल आदमी पागल हो रहा होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर कट केस है ना, मैं एक बात कह रहा हूँ ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। पेशेंट वाज इन द यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, अब ये जुमला रटाया है, ठीक है ना। when he got drowsy at the home, जब वो घर पे था तो ड्राउजीनेस हो गई, ओके, हैज फैमिली चेक्ड ब्लड शुगर विच वाज 56 ओनली मिलीग्राम, मतलब कितने मिलीग्राम पर आप डिक्लेयर करते हैं नॉन डायबिटिक को हाइपोग्लाइसीमिया, इससे बात करेंगे, आपसे बताएंगे बाद में। He also had fits when he was brought to the hospital. शुगर जो थी वो सारे 56 थी। ये क्लियर हो गया हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, जिसकी वजह से ऑल्टर्ड सेंसोरियम हुआ, फोकल फिट्स हो गए। अब पेशेंट्स ड्रग हिस्ट्री ये थी कि इसके ग्लिमीप्राइड ले रहे हैं, हेमरल 1 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम, एटेनोलॉल 50 मिलीग्राम, और साथ में टैबलेट लिखी है न्यू डोपामिन, ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ होती है। Treatment given in the ward, injection 500 dextrose per liter and tablet clopidogrel टैबलेट जो है वो इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें जो कैम्प्रो के नाम से लिखी है। कैम्प्रो अगर ये है तो एंटीकोलिनर्जिक के यूज इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज, तो वो ये समझ रहा है कि शायद ये पार्ट ऑफ द पार्किंसन है। इसने लिखा है, क्यों लिखा है मुझे नहीं पता। ग्लूसरना तो एक ज़ाहिर है कि न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट है, ठीक है, आप दे सकते हैं। टैबलेट लिपिकेट 20 मिलीग्राम इस कंडीशन में क्यों दी गई है, क्योंकि वो 10 साल पहले हुआ है, 15 साल पहले का तो एक वो 20 मिलीग्राम लिपिकेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको 10 मिलीग्राम करना चाहिए था। अगर देनी ही आपने तो अभी इस वक्त देने की क्या जरूरत थी। मतलब मैनेज आप करना इसको, इन चीज़ों को छोड़ें, मैनेज करना इसको है। पेशेंट जो है ना, इसके अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इस हाउस ऑफिसर के साथ, वो ये कि कंटिन्यूसली हैविंग फ्लक्चुएटिंग इसको सेंसेशन है, पहचानता है कभी नहीं पहचानता। अगरचे इसका GCS 14/15 है, ये ऑल्टर हो जाता है, कभी 10 हो जाता है, कभी 9 हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन साथ में ऑक्सीजन सेचुरेशन भी ड्रॉप हो रही है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब हाइपोक्सीमिया जो है वर्स करेगा इस कंडीशन, तो हाइपोक्सीमिया क्यों हो रहा है भाई, इसकी वजह उसको बतानी है जो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है। फिर CPAP लगा दिया आपने, वो हटा देते हैं तो फिर दोबारा ड्रॉप हो जाती है। द पेशेंट वाज बिकमिंग हाइपोटेंसिव एंड ड्राउजी विद लो सैचुरेशन, BP रहता है इसका 80/50, डेफिनेटली हाइपोटेंशन। और इससे क्या होगा कि ट्रांससेरेब्रल परफ्यूजन नहीं होगी, और जब ट्रांससेरेब्रल परफ्यूजन नहीं होगी तो ये वर्स हो जाएगा, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, फोकल फिट्स वर्स हो जाएंगे। सारे के सारे जो आप
सारी पैथोफिजियोलॉजी जो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर उसको आनी चाहिए अगर वो FCPS पास करना चाहता है। अदरवाइज वो नहीं इंटरेस्टेड होता है, उसके मतलब वो उसको कामयाबी बहुत मुश्किल है। अब आपने लिखा कि पेशेंट स्टार्टेड ऑन द लिवर विद यानी नॉन एपिनेफ्रिन सपोर्ट। आपने डोपामिन क्यों नहीं इस्तेमाल किए, आपने डोपामिन क्यों नहीं इस्तेमाल किए? मैं मतलब ये कोई भी क्वेश्चन करेगा ना, ये क्यों सेलेक्ट किए, ये उसने जवाब नहीं दिया। और अगर पूछेंगे तो वो देना भी मुश्किल होगा। हम आपको बाद में बताएंगे जब आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको ये भी हम सर्कुलेटरी फेलियर में जाएंगे या कार्डियोजेनिक शॉक में जाएंगे तो फिर आप जो है ना क्या करते हैं। और तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ क्योंकि वो वीडियो तो वो देखता नहीं है इसको, लेकिन भरा नहीं भी पेशेंट इज हैविंग ऑल्सो हैविंग दी फ्लक्चुएटिंग हाइपोग्लाइसेमिया। वो आपने बता ही दिया, वो ड्रॉप हो जाता है 56 पे, फिर आप इसको ग्लूकोज लगाते हैं 80 हो जाता है, फिर गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? ये ब्रिटल डायबिटीज़ है, इसको कहते हैं ब्रिटल डायबिटीज़। फिर उन्होंने क्या किया कि फॉर विच इसके लिए फ्लक्चुएटिंग शुगर लेवल्स के लिए 25% एक्सट्रोज नहीं, ये पहले दे देना चाहिए था, 2 to 3 mg पहले दे देना चाहिए। बाद में दे रहे हैं आप जब आपने कई एपिसोड हो गए हाइपोग्लाइसीमिया के। ये तो गलत मैनेजमेंट ही गलत हो गया। ये जो भी सुन रहा है, जिसने पेशेंट ने ये बताया है और इमीडिएट सुपरवाइजर वो भी मेरा स्टूडेंट होगा, तो उन दोनों की नहीं अर्जी है कि भाई ये पहले करना चाहिए ना, मेंटेनेंस रखना चाहिए 10% से 25% एक्स्ट्रा उस वक्त तक देते रहे, 6 आवरली या 4 आवरली देते रहें, और जब तक कि उसका लेवल 80 से ऊपर ना हो जाए। 90 80 90 तक हो जाएगा और मेंटेन कर सकता है वो, और साथ में न्यूट्रिएंट ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो फिर जो है ना ये हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूँ कि ये ग्लिमिप्राइड जो है, अगर ये 1 मिलीग्राम है, इसकी तहकीक करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसने दिन में कितनी मरतबा खाई थी। हमारे जो खा रहा है, हो सकता है उसने 2 मरतबा खाई हो, तो याद ही नहीं होता, भूल जाते हैं लोग। तो अब ये है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, ये करती है जितनी भी याद रखें ड्रग, जितनी सल्फोनिल यूरियास है, चाहे वो 2nd जनरेशन हो या 3rd जनरेशन हो, वो सारी की सारी हाइपोग्लाइसेमी करती हैं, ठीक ठाक हाइपोग्लाइसेमी करती हैं, और ख़ास तौर पे टाइप बी में करती हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकल ड्रग्स होती हैं जो कि आप टाइप बी में देते हैं, यही ड्रग्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। करंट BP 140/90 नहीं, आपने मेंटेन कर लिया, BP को तो मेंटेन कर लिया, लेकिन अब लिवो फिट सपोर्ट भाई इसको भी तो टेपर करोगे ना, तो आगे भी जाना है ना, इसको निकालना है और इसका नॉर्मलाइज करना है। तो ये जा रहा है हाइपरटेंशन में, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है, या कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके बारे में कोई तफसीलात नहीं है। एक्सरसाइज मुझे चाहिए, ECG चाहिए मुझे, फिर आपको भी चाहिए होगा बाद में, एंजाइम चाहिए वगैरह वगैरह, आपको पता है। इसके बाद उससे ये पता चलेगा, मज़ीद तफसीलात पता चलेंगी, इलेक्ट्रोलाइट्स और सारे आपको, आपके पास पूरा का पूरा शेड्यूल जो अभी नहीं कराया गया था, अगर आपके इमीडिएट सुपरवाइजर से मिस हुआ है तो आप करा दें। तो ये जो है ना, ये बेचारे 2 लोगों का किस्सा सुना दिया गया है। आपकी 2 हाउस ऑफिसर हैं, एक जो इधर है एक उधर है, एक वार्ड में एक साइड पे कोने पे, एक दूसरे कोने पे, हर एक के बाद 10-10 बेड हैं, ठीक है ना। और उसके बाद दो उसके पास या 2 या 3 ICU के पेशेंट हैं, और उसके पास भी 2 या 3 ICU के पेशेंट हैं, और ICU में जो है नर्स बैठी हुई है, स्टाफ, और डॉक्टर जो है वो जो बंदे हैं दाखिल में, वो ये आप ही को डॉक्टर समझ लेंगे, यही बंदा है डॉक्टर। क्योंकि वो जो आ रहा है बंदा जो दूसरा PG, वो तो आता है फिर चला जाता है, आप मुस्तकिल काम किए जा रहे हैं ना। तो वो जितनी भी हमदर्दियाँ हैं आपके साथ, उनके लवाकिन की, वो आपके साथ है। नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर उस बंदे को कुछ खुदा न खुदा हो गया तो सबसे पहले वो आपको पकड़ेंगे कि यार ये कैसे हो गया, अभी तो ठीक था, ये मैं किया था, खाना खाने वापस आया, डेथ हो गई, क्या क्यों हुई। तो ये आपका काम नहीं है, आप बताएंगे मैं हाउस ऑफिसर हूँ, मेरे डेजिग्नेशन इसके ऊपर होता है इमीडिएट सुपरवाइज़र, आप वो कमरे में होगा, आप उससे बात करें, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आप ना एक्सप्लेन कीजिए, अपने ऊपर ना लीजिए इसको, फिर लीगल मैटर बनेंगे। खुदा ना खाते वो तेज तर्रार किस्म के लोग होते हैं, जियो को और इसको और ये दूसरे
जो बड़े बड़े इदारे उनको बुला लेते हैं, वहाँ पे कहानी बनाते हैं अपनी तरफ से, उनको अच्छे पैसे मिलते हैं इसके। प्लीज़ ज़रा सा ख्याल कीजिएगा। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो जो कोई इवेंट हो जाता है तो फिर उसका टोन भी चेंज हो जाता है। इससे पहले वो आपको चिकन ला के खिला रहा होता है, चीज़ें ला के दे रहा होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है पेशेंट की तो बहुत नाराज़ होता है। वो सारा बोझ उस आदमी में डाल रहा होता है जो उसे अटेंड कर रहा है। अटेंडिंग फिजिशियन कौन है यहाँ? वो तो आपको समझ रहे हैं। तो ये जो है ना, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, डायलेमा है ये। ना किसी को डेजिग्नेशन नहीं पता, किसी को करिकुलम नहीं मालूम, ये सारी चीज़ें अगर ये मालूम होती, उस तरह से लोग इसको गाइडलाइन देते, तो ये प्रॉब्लम में ये दोनों बच्चे नहीं आते। इनके साथ जो आया है ये जो भी उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आती। मैं इसको इस तरह से समझ सकता हूँ कि जो मेडिकल वार्ड में जो केसेज एडमिट हुए हैं ज़्यादातर लिवर डिजीज़ के हैं या इससे रिलेटेड डिजीज़ दूसरी भी हैं, फिर मान लेते हैं कुछ कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, तो ज़्यादा पूरे वार्ड का ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि हम इसको सेपरेटली जो कम्युनिकेशन है उनको बता दें, इन हायर लेवल पे जाके बता दें। जैसे तबीयत ठीक होती है, बेहतर हो, तो आई विल इंशाल्लाह इसको अलग अलग करके बता देंगे इंशाल्लाह। हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, कोई लालच नहीं है, कोई शोहरत नहीं चाहिए, मेहरबानी कुछ नहीं चाहिए, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।